Hello, respected parents and my dear students. I Nidisha, teacher of Hiramani Higher Secondary School. Today we'll brief you about postcard campaign which is organized by Postal Department under the celebration of Azadi का अमृत महोत्सव। आप सब जानते ही हैं कि इस साल हमारी आज़ादी के 75 साल पूरे हुए, तो उस अंतर्गत हमारी सरकार अलग अलग प्रतियोगिता आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत लेके आती है। वैसी ही एक प्रतियोगिता की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म that Department of Post under Azadi Ka Amrit Mahotsav is organizing postcard campaign wherein the students are required to write a postcard to the Honorable Prime Minister on any of the two topics: unsung heroes of freedom struggle, and second one, my vision for India in 2047. All the students belonging to class 8 to 12 can participate in the said campaign. The postcard may be written in English, Hindi, or any of the scheduled language. Here our regional language is Gujarati. So बच्चों, आप इंग्लिश, हिंदी या गुजराती तीनों में से कोई भी भाषा में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को पोस्ट कार्ड पे अपनी विचारधारा किन्हीं दो दिए गए हुए विषय में से किसी एक विषय पे लिख के भेज सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द पोस्ट कार्ड इज 15 दिसंबर 2021। आपको 15 दिसंबर तक ये प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए पोस्ट कार्ड लिखना होगा और आपको सबमिट करना होगा। Pre-stamped postcard will be supplied by the department at 50 पैसा per postcard to the participating students. So आपकी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस जाके आप 50 पैसे में ही केवल पोस्ट कार्ड खरीद सकते हैं। नाउ अब पोस्ट कार्ड कैसे लिखा जाता है? लेट्स अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ पोस्ट कार्ड राइटिंग। A postcard is a very convenient and cheap means of written communication. आज के इस युग में आपने शायद पोस्टकार्ड देखे ना हो, इसीलिए मैंने पोस्टकार्ड के पिक्चर्स भी आपके नॉलेज के लिए यहाँ रखे हैं। वी यूज इट फॉर बोथ पर्सनल एंड बिजनेस पर्पसेस। द पोस्टकार्ड इज सुटेबल ओनली फॉर अ ब्रीफ एंड टू द पॉइंट कम्युनिकेशन। However, the postcard differs very little from a letter in this format. Students must ensure well that their postcard read authentic and experimental. आपकी भाषा, आपके विचार आपको यहाँ संक्षिप्त में प्रस्तुत करने हैं। You can use a conversational style for writing a postcard, which transports the distant reader to their own world and making things come alive for him or her. ऐसी विचारधारा, ऐसी भाषा आपको रखनी है कि आपके विचार पढ़ने वाले के दिमाग में अच्छा सा एक चित्र पैदा कर सके। Children, for your kind reference, I have given here format of a postcard. Here you can see left hand side you can write a date on the front side of the postcard and the place from where you are writing. Then जो भी आपका विषय है, whichever the subject is that, you have to write your main contents. You can start from the first time and you can complete it in the back side. In the end, you have to write your brief closing and your name. And in box where the receiver's complete address is there, you have to write the address of our Prime Minister with PIN code, and if it is with the stamp then no need to stick a stamp, but it is without a stamp then you have to assure that you have to stick a stamp on it. Let's
Understand postcard writing tips. Make Make your writing as clear and legible as possible, students. Use a ballpoint pen rather than a felt tip pen, that is your ink pen or colorful pens. It is less likely to smear if it gets wet. है ना? आपके हैंडराइटिंग अगर स्प्रेड हो गए तो वो पढ़ने में दिक्कत आएगी. सो it is better you use ballpoint pen. If you want to be formal, write dear and then name. You can write respected also, to our honorable Prime Minister. Your message must be short and sweet, beginning with your thoughts of the other person will make them feel loved. Determine the objectives your postcard. लिखने से पहले आप अपने पॉइंट्स बना लीजिए. What you wish to convey, what you wish to write. Add as many details as possible, but the conscious of how much space you have. You have to be very conscious. आपके पास कितनी जगह है, and you have to plan accordingly, and you have to write as per your space only. Means आपके सारे पॉइंट्स आप जो सोच रहे हो वो जितनी भी आपके पास स्पेस है उसमें बहुत अच्छे से सारे इंक्लूड हो जाने चाहिए. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आफ्टर राइटिंग योर मैसेज, do not forget to sign your name on the bottom left of the postcard too. Here in this slide, I have given an example. So you can go through this and you can write your postcard according to it. Students, if you wish to write the postcard in Hindi, आपके विषय है स्वतंत्रता संग्राम के नायक या 2047 की साल का मेरे सपनों का भारत. And if you wish to write the postcard in Gujarati, your subjects are સ્વતંત્ર સંગ્રામના નાયકો and second topic 2047ના વર્ષનું મારા સ્વપ્નનું ભારત. So you can write any of the topic and in any of these three languages, whether English, Gujarati or Hindi. Children, note that last date of submission of postcard is 15th December, this Wednesday, and please submit your postcard to your respective class teacher.